Hello everyone and welcome back. I am C. Gaurav Chopra and welcome you for statistics classes. So welcome back everyone and very good afternoon. So let's see who all are live with us now. Janvi is there, Amit, Praniti, Mangalpalli, Sandhya, Pavan, Akshata, Swati, Salini, Parth, Asha, Ayush, Chaitanya, Gagan, Anant, Ritu, Rohit, great. So welcome everybody. And let us begin with the today's topic, that is statistical description of data. So if we talk about statistics, so overall weightage is 40 marks. So statistics covers your 40 mark portion, and as compared to mathematics, it is quite easy and scoring, as well as less time consuming. So few chapters are there and you can easily score good marks in this subject. Okay. So let us begin. Om Gupta says, feeling very excited on getting you back. That's great. So do not waste our time and let us begin with this topic. So this chapter is basically about application of statistics. कि statistics का use कहाँ पर होता है और किस तरह से उसका use होता है in our practical life. तो chapter की beginning में शुरुआत में we will be studying about what is the key point of statistics या statistics की शुरुआत कहाँ से होती है. So अगर एक चीज नहीं हो तो stats possible नहीं है. So what is the key or important thing without which statistics is not possible? So the main important thing, the most important thing for statistics is data. Yes, अगर हमारे पास data available है तो हम उससे कुछ भी calculate कर सकते हैं. We can calculate anything. So first and foremost requirement is data. Now data का collection कैसे होगा? And we can divide this data into two parts, primary and secondary data. Primary and secondary data. After this, we will be moving forward on the presentation of data, that is in textual form, in tabular form, or in diagrammatic form, that is, which can be graph, chart, picture. So all these points are covered in this topic. Okay, so let us begin. So let us begin with introduction of statistics. So the first point, यहाँ पर हम क्या करेंगे, important points, important lines को भी मार्क कर लेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है या एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं. Alright. So the first thing is where statistics is used. So it is used at everywhere. हर जगह पे stats का use होता है, whether it is management, commerce, economics, social sciences, mathematics, or any other place. If we talk about the places, it is used in public services, defense, banking, insurance, tourism, hospitality, police, military. ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां stats का use नहीं हो. Even accountancy. So statistics is also used in accountancy because we have to compare current year figures with the previous year or past 5 years, 10 years. So all these comparison is basically a part of statistics. So stats का use हर जगह पे होता है. So this is the first point which we have to understand. Okay. So you can mark this first point. Then next point is कि गवर्नमेंट के पास अगर स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है तो गवर्नमेंट उससे क्या क्या कैलकुलेट करती है. So you might have studied in your lower classes also, that is about macroeconomics. Macroeconomics, like in every 10 years government collects some data and prepare census report. हर 10 साल में डेटा कलेक्ट होता है और उससे क्या बनती है, सेंसस रिपोर्ट. Like the previous report was for 2021, before that 2011, 2001, and so on. So in this kind of report, some data are covered, like what is the population of the country, population of country, which is divided in state-wise, city-wise. Then of this population, how many are male and female, how many are employed and unemployed. Then
what are their diseases or some specific points, then what are the religion. So all these informations are collected once in every 10 years and these are covered in a census report. इसको हम कहाँ include करते हैं? Census report. Okay. So this is the basic thing. एक बिजनेसमैन को स्टैटिस्टिक्स क्यों चाहिए, डेटा क्यों चाहिए? फोरकास्ट करने के लिए कि फ्यूचर में कितनी डिमांड आने वाली है, अकॉर्डिंगली ही विल प्रोड्यूस द गुड्स, ही विल सप्लाई द गुड्स। तो बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी है, कितनी पॉपुलेशन है उसके लिए पॉलिसी क्या बननी चाहिए, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, व्हाट अबाउट द बैंक रेट्स, बैंक रेट इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। सो all these decisions are taken based on statistical data. So most of the decisions, चाहे वो गवर्नमेंट का है, बिजनेसमैन का है या एक नॉर्मल पर्सन का है, that is based on data. Okay, so next point is history of statistics. Now history क्या है? That means word statistics का origin कहाँ से हुआ है? So this is basically a mystery question कि इसका origin कहाँ से हुआ है exactly हमें नहीं पता, but इनको अलग अलग languages में we know them by different words. In Latin it is known as status. Statistics का Latin word क्या है? Status. Then Italian word is statista, German word is statistic, and French word is statistique. So these are the different terms used in different languages. All right. So the most important thing is the terms. कि हम क्या क्या टर्म से उसको बोलते हैं। इटालियन वर्ड क्या है? स्टैटिस्टा, लैटिन वर्ड इज स्टेटस, जर्मन वर्ड इज स्टैटिस्टिक एंड फ्रेंच वर्ड इज स्टैटिस्टिक। ऑलराइट, ओके। नाउ डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन two sense. One is singular, other one is plural sense. So we can mark this. One is singular sense and other one is plural sense. So there are two definitions of statistics. Now, when statistics is used as a plural noun, अगर हम plural noun की बात करते हैं, then we are talking about qualitative as well as quantitative data that are collected with a view of having some statistical analysis. यानी कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया, it can be qualitative as well as quantitative. Now what is the difference between these two words? Qualitative का मतलब क्या है? हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक आपने किसी पर्सन को देख के बोला like you are very beautiful, so you are very beautiful. इसका क्या मतलब हो गया? This is a quality, this is a nature, this is the characteristic. So this is also the part of statistical data. या फिर हमने किसी को बोला you are very intelligent, so intelligent is also the part of quality. Then next one can be quantity, like your weight is this much, or average marks of few students is 45. So these become quantitative data. तो जहां पर हम नंबर के साथ डेटा को एक्सप्रेस करते हैं, it becomes quantitative. Whereas when we are using some characteristics, then it is qualitative. Okay. So this chapter is majority a theoretical chapter and a basic chapter of statistics, but the weightage of this chapter is very good. So on an average 5 questions normally come from this chapter. You can say 5 to 6 questions come from this chapter. So this chapter is very easy, very scoring, and not much efforts are required. Okay, so
If we are talking about plural noun, it means statistics can be qualitative, quantitative, and data are collected for some analysis. हमने data collect किया है कुछ analysis करने के लिए, लेकिन जब हम उसको define करते हैं in statistical noun, so it is known as the scientific method that is employed for collecting, analyzing, and presenting data, leading finally to draw statistical inferences about some important characteristics. Or it can be science of counting or science of averages. So in short, singular का मतलब क्या हो गया कि हमने डेटा कैसे कलेक्ट किया है, वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा. Then data को collect करने के बाद what we have to do, we have to analyze the data and we have to present that data in some format. तो कुछ भी इस तरह की चीजें होती है, that is basically a part of singular noun. So we have done the two portions, one is plural and second one is singular. Then next point is application of statistics. This we have covered above. It is used everywhere, whether we are talking about economics, business management, commerce, industry, it is used everywhere. Okay. Then modern developments in economics. Now, if we talk about the day-to-day development, आज की दुनिया में क्या हमें देखने को मिल रहा है? AI. AI means artificial intelligence. Artificial intelligence से हम क्या समझते हैं? If you go deep into it, if you dive deep into it, you will feel that जो भी काम हम कर रहे हैं, ये सारा काम आज की डेट में एक रोबोट कर सकता है, सॉफ्टवेयर कर सकता है, और कहीं ना कहीं उसमें कंसिस्टेंसी और क्वालिटी भी ह्यूमन से ज्यादा हमें देखने को मिलने लगी है. दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये क्रिएट कैसे हुआ है? ऑल दीज एआई आर क्रिएटेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा. हमारे माइंड से, हमारे कंप्यूटर से, हमारे मोबाइल से, एवरीवेयर, हर जगह से डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है एंड वहां से क्रिएट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जब ये इंटेलिजेंस किसी मशीन में, किसी रोबोट में इंसर्ट करते हैं, तो वो सेम टू सेम हमारा काम कर सकता है. Industries, people are employing the robots. In place of human workers, they are using robots because robots are consistent in doing their work. They are having good output. So that is why people are focusing nowadays more on artificial intelligence. Okay. Now, there are few chapters which we can see that they are practically used in economics. One is time series analysis. Like time के साथ में क्या क्या changes होता है, pattern क्या है? Like price of a commodity 2005 में price 2005 में let's say price of a commodity was 100 rupees. 2010 में price 125. Then 2015 में it is 160. In 2020 it is 210. Then future में क्या प्राइस होने वाली है? 2025 में क्या प्राइस होगी और 26 में क्या प्राइस होगी? All these can be estimated using this time series analysis. All right. So economics के अंदर इसका usage है. Then we can say business management. Business management में कहाँ पर required है? जब भी किसी बिजनेस की हम बात करते हैं, then we have to always forecast the things कि next future में क्या आने वाला है, next 2 years, 5 years, 10 years का भी हमें forecast करना पड़ता है. If you have practically seen some of the shows like Shark Tank, if you follow these kind of shows, you will find that आज की दुनिया कितनी आगे का सोचने लग गई है. आगे आफ्टर 5 years, 10 years उन्हें कहाँ जाना है, किस तरह से पहुंचना है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन. लेकिन कुछ लोग इमेजिन करके वहां तक पहुंच रहे हैं. ऑल दीज आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा. स्टैटिस्टिकल टूल्स ऐसे आ चुके हैं जिसकी हेल्प से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं.
So most of the decisions earlier were based on trial and errors, but nowadays we are using statistical tools to calculate accuracy. Basically accurate जितना रिजल्ट हमारा आएगा उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा. So it is used in business management. Then statistics का role commerce में और industry में कैसे है? So if we talk about commerce, then in accounting we record each and everything. Like we prepare trading account, profit and loss account, even manufacturing account, and at last balance sheet. तो ये सब बनाने के लिए आपको क्या required है? You require data. Like what are your sales, how much raw material we have purchased, wages and salaries paid, then nature of products, so each and everything. Then measures of central tendency, dispersion, correlation, regression, all these are the chapters. ये ऐसे chapters है जो commerce में industry में help करते हैं. तो statistics के chapters कहाँ help कर रहे हैं? हर जगह. Economics में, business management, in commerce, industry, everywhere. Okay. Any doubt till here, guys? All perfect. So this is basically a theoretical chapter. तो इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है कैसे हम एग्जाम में मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. तो आई एम like including each and every important point, उसको मार्क भी कर रहे हैं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, so that you can easily revise also. Now, statistics के इतने सारे फायदे हमने देख लिए. Now there are few limitations as well. क्या limitations है? Statistics deals with aggregates. Stats का use है aggregates, that means total. Statistics is dealing with aggregate, total, or you can say sum. Sum. An individual to an statistician has no significance except the fact it is a part of aggregate. So basically यहाँ पर limitation क्या है, drawback क्या है? Like हमने कहा एक क्लास का हमने टेस्ट लिया, क्लास में there were 50 students and their average marks was, let's say, 74%. 74%. Now there is one student who might have secured 93%, some other might have secured 99%, some have secured, let's say, 29%, but all these are the part of this class, of this group. So they will be counted under this category. अगर किसी के 99% भी आए हैं तो भी वो उस क्लास में से ही बिलोंग करता है जिसका एवरेज है 74%. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक लिमिटेशन मान सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, बट इन द रफ सेंस इट कैन बी सेट टू अ लिमिटेशन. ओके. So Anushka Rajput says crystal clear. Akshita saying crystal clear. Purutha is asking total weightage of this chapter. This chapter weighs around 5 to 6 marks. Then Priyadarshini says, please explain economics portion once again. Okay. See, in economics we are dealing with demand, supply, production, cost. ये सारी चीजें हमें required रहती. अगर आपको एक demand curve बनाना है, then how you will form a demand curve? For demand curve, you need quantity as well as what you require, price and quantity. If price is ₹10, then quantity demanded is 100 units. If price becomes, let's say, 15, then quantity is 80. If price is 20, then demand becomes 60. So all these are statistical data. तो हमने मार्केट से डेटा कलेक्ट किया कि अगर मार्केट में 10 रुपीज प्राइस हो जाती है तो कस्टमर 100 यूनिट्स की डिमांड करता है. If price is 15, then customer demand 80 units. 20 price है, then customer demand 60 units. So this is basically a statistical data. तो economics के अंदर आपको कोई भी चीज करनी है, डेटा पहले चाहिएगा. Same as for supply. For supply also you require price as well as quantity. Then in order to calculate the cost of raw material, again you require the data, whether it is data for raw material purchase,
whether it is wages you are paying to your employees, or you are doing some advertisement expenditure or any other thing. So all these requires data. All right. So it is used in economics as well. Vidisha is asking, theory questions will come from this chapter only? No. This chapter, from this chapter, of course, theory questions will come, but from other chapters as well. So you have to be prepared for other chapters also. And this chapter also covers some practical portion, not much, but some practical portion. Okay, the next one is point number 2. Statistics is concerned with quantitative data. Yes, so mainly we are talking about here quantitative data, that is numerical data. Data numbers में होना जरूरी है. अगर नंबर में नहीं है तो हम वेरिएशन कैसे पता लगाएंगे? How much is the variation? How much is the gap? So qualitative data can be converted to quantitative by providing a numerical description to corresponding qualitative data. Now, there can be some problem with qualitative data. Let's say we have taken test of student and the performance was poor. Now, in next test, performance was improved. Then in next test, again, there is some improvement. But how much is the improvement? How much we have to calculate? What are the figures? So if it is not available, then we cannot compare. So it is always better to give some number. If the performance is poor, let's give 3 out of 10. If it is improving, let's give 5 out of 10. Again, further improvement, 6 out of 10. So always we have to assign some quantitative data. That is must. If we do not assign, then we will not be able to compare the things. All right. Then the next one is future projection. That means future हमारा uncertain है, of course. कल मेरे पास कितने कस्टमर आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ कितने कस्टमर्स आएंगे, कितने ऑर्डर्स मेरे पास आएंगे, दैट इज टोटली अननोन. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट here with the help of statistical tools we can analyze our past data कि लास्ट ईयर कितनी सेल्स थी, उससे लास्ट ईयर कितनी सेल्स हो रही है, अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोजेक्ट अवर फ्यूचर. बट डायरेक्टली अगर हम देखें तो ऑल दीज आर नॉट प्रेडिक्टेबल. तो ऑलवेज जो हमारे पास डेटा आएगा दैट माइट बी इनएक्यूरेट, देयर माइट बी सम इनएक्यूरेसी इन्वॉल्व. तो ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिकल analysis is based on some formula, some format, some assumptions, so there might be some inaccuracy. It is not 100% perfect. Like अगर statistics ने क्या दिया कि next month आपके पास 5 orders आने वाले हैं, but in reality 3 orders were received. So we cannot blame statistics for this कि like stats में तो 5 बताया था, मैंने 5 prepare कर लिया, but now 3 ही sale हुआ. So what to do for the remaining 2? So this we cannot blame on statistics. Then the fourth one, the theory of statistical inference is built upon random sampling, and if the rules of random sampling are not strictly adhered, the conclusion drawn might be unrepresentative and erroneous. Now, what this point wants us to convey, ये point क्या बताना चाहता है कि statistics में एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग. अब सैम्पलिंग का मतलब क्या है? Let's say there is a bulb manufacturing company. Bulb manufacturing company है, अब वो डेली hundreds and thousands of bulb manufacture करती है. अब मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर उसको तुम्हें टेस्ट करना है, like what is the life of bulb, bulb की लाइफ कितनी है. अब हमने इनिशियली लेट्स से टेस्ट किया एंड हमें पता लगा 1000 आवर्स, किसी में आ रहा है 1010 आवर्स,
किसी के अंदर 980 आवर्स, एवरेज लेट्स से वी हैव टेकन 995, दिस इज द एवरेज। बट रैंडमली अगर हमने किसी बल्ब को यूज किया और उसकी लाइफ अगर 900 हो गई तो देयर माइट बी सम वेरिएशंस, कुछ वेरिएशन पॉसिबल हो सकते हैं, बिकॉज जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन सैंपल। 100% चेकिंग करना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो इफ वी सी इन स्टैटिस्टिक्स देयर इज टू टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हम दो तरीके से करते हैं, वन इज कंप्लीट इंस्पेक्शन एंड सेकेंड वन इज सैंपल। कंप्लीट का मतलब क्या, यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी यूनिट, हर यूनिट का आपको चेक करना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। वेयर एज इन सैंपल यू चेक द लिमिटेड क्वांटिटी, कुछ लिमिटेड क्वांटिटी हम चेक करते हैं। तो कंप्लीट नॉर्मली कहां यूज होता है, लेट्स से देयर इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फैक्ट्री और यू कैन से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नाउ जैसे ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हुआ तो कंपनी को पहले चेक करना पड़ेगा वेदर मोबाइल इज इन रनिंग कंडीशन और नॉट, क्या वो रनिंग कंडीशन में है या नहीं है, उनको ऑन करके चेक करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, फीचर्स देखने पड़ेंगे, तो इट इज कंप्लीट एन्यूमरेशन। लेकिन जहां पर डेटा ऐसा होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि कुछ पोर्शन हमने चेक किया, बाकी हम मान लेते हैं इट विल बी ऑलराइट। लेट्स से इफ वी आर गोइंग फॉर परचेजिंग व्हीट, लेट्स से आपको व्हीट परचेज करना है और राइस परचेज करना है, कितना क्वांटिटी परचेज करना है, 200 किलोग्राम्स, 200 केजी आपको परचेज करना है ना। अब व्हीट का बैग आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे ग्रेन्स है अवेलेबल है एंड इट इज ऑफ लाइक 200 kilograms. Now, is it possible to check each and every grain? क्या एक एक दाना आप चेक कर सकते हो कि वेदर इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, वेदर यू कैन चेक? नो। तो प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी ग्रेन वी कैन नॉट चेक। सो व्हाट वी डू इज टेक द सैंपल फ्रॉम टॉप, then take some sample from middle, take few sample from bottom। तो हम हर जगह से कुछ सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं। इफ इट मीट्स आवर स्टैंडर्ड, अगर वो हमारे स्टैंडर्ड को मैच करता है देन वी बाय दैट प्रोडक्ट, इफ इट डज नॉट मैच देन वी डू नॉट बाय। so in such cases sample method is used, all right। तो कुछ प्लेसेस पे कंप्लीट एन्यूमरेशन है एंड सम प्लेसेस सैंपल मेथड इज यूज्ड, all right। now there is one more case, let's say if you are going doctor for a blood test, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपको ब्लड टेस्ट करवाना है। नाउ ब्लड टेस्ट में आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, वेदर यू विल गो फॉर कंप्लीट एन्यूमरेशन और सैंपल। कंप्लीट मींस आपको पूरी बॉडी का जितना भी ब्लड है 4 लीटर 5 लीटर पूरा देना पड़ेगा, चेक करके शाम को वापस डाल देंगे। इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। Whereas in sample enumeration, what is done, 5 ml or 10 ml blood is taken for testing purpose। 5 ml blood ले लिया for testing purpose। If it is okay, अगर इसमें कोई infection नहीं है, इसमें कोई problem नहीं है, then by default we assume that our whole lot of blood is okay, कि जो हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो पूरा ही पूरा एरर फ्री है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, so collection of data is based on basically two methods, one is complete enumeration or complete method and second one is sample method। now जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, so data is basically divided into two parts, primary data and secondary data, and before that there are two more terms, one is variable and other one is attribute। First one is variable and second one is attribute। Now what is a variable? Variable means anything having some
mathematical value, anything having some mathematical value is a variable. ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नंबर में डिनोट कर सकते हैं, it is a variable. Let's take marks. Marks are defined in numbers, like 9 out of 10, 8 out of 10. So these are variable. Similarly, height. Height of a person is 160 centimeter. Someone is having 157. Other is having 181 centimeter. So height is also a mathematical data. So it is a variable. Then purchase, sale. So all these are example of variable. So what about attributes? Attributes means quality. जहां पर हम क्वालिटी में डील करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, कोई पर्सन कितना ईमानदार है, ऑनेस्ट है. देन इंटेलिजेंसी, देन ब्यूटी. All these are the examples of attributes, that is quality. तो जहां पर भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, it is known as attribute, और जहां पर हमारे पास डेटा होता है, it is variable. Okay. So quantitative characteristics is known as variable. तो जहां पर भी क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल डेटा है, it is known as variable. So variable can be further classified as discrete or continuous. Now variable के हमने two parts कर दिए हैं. One is discrete and second one is continuous. Now when variable assumes a finite or a countably infinite number of isolated values, it is known as discrete variable. Now discrete variable का मतलब क्या है? जहां पर हम बेसिकली प्रॉपर काउंट कर सकते हैं, it becomes part of discrete variable. Like number of petals in a flower. एक फ्लावर में कितनी petals है? 20, 25, 40, 50. Then number of misprints in a book, 2, 5, 10. Number of road accidents in a particular locality. तो ये सारी चीजें हम easily count कर सकते हैं. So these are the part of discrete variable. Then a variable on other hand is continuous if it can assume any value between the given class interval. कि अगर तुम्हें कोई भी क्लास इंटरवल दिया है तो उसमें उसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है. Like from 10 to 20 it can be any value, even like 10.15, 18.33, 17.46. ऐसी कुछ भी वैल्यू आ सकती है in a certain class interval. Then it is known as continuous. और जहां पर बेसिकली एक राउंड ऑफ डेटा अवेलेबल होता है, लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो ये डेसिमल में नहीं मिलेगा. सो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस के एग्जांपल क्या है? हाइट, वेट, सेल्स, प्रॉफिट एंड सो ऑन. तो इसके अंदर कोई प्री डिफाइंड लिमिट नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज नहीं है कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 180 होगी, 181 होगी. इट कैन बी 180.01, 180.05. सो ऐसी कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है. तो जब ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल. ऑलराइट. Now let us classify the data. Data को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो डेटा इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी का मतलब है ओरिजिनल डेटा, ऐसा डेटा जो कि ओरिजिनल नेचर का है, पहली बार हमने इकट्ठा किया है, मेहनत की है, दैट इज प्राइमरी डेटा. सो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा? सेंसस रिपोर्ट. सेंसस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है रिपोर्ट, कैसे प्रिपेयर होती है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग लगते हैं जो हर एरिया में, हर सिटी में, घरों में जाकर के लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उनके आंसर लेते हैं. तो इतनी मेहनत करके ये डेटा इकट्ठा
किया जाता है, दिस इज अ प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या है? जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो रखा है, हमें उसका रीयूज करना है। तो रीयूज ऑफ ओरिजिनल डेटा इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। So the data which are collected for the first time by an investigator, it is known as the primary data. उसको हम बोलते हैं primary data. Whereas data is secondary if it is already being collected. अगर वो data पहले से collected है, पहले से collect हो रखा है, किसी person ने, किसी agency ने करके रखा है, then it becomes secondary data. So let's take one example. If Professor Das collect the data on height of every student, Professor Das ने data collect किया है, then it is known as the primary data. Now there is another Professor Bhargav who has used the data collected by Professor Das. तो जो Professor Das ने collect किया है, उसको as it is अगर use कर लिया है, then it becomes the part of secondary data. Okay, तो कलेक्शन कैसे हो सकता है प्राइमरी डेटा का? फर्स्ट मेथड इज नोन एज इंटरव्यू मेथड। सबसे पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड। सेकंड वन इज मेल क्वेश्चनरी, कि जो हमारे पास क्वेश्चनरी है उसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछेंगे, सामने से जवाब आ जाएगा। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि चीजों को ऑब्जर्व करके, देख करके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज क्वेश्चनरीज फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स, कि लोगों ने हमें कुछ जवाब दिया है, कुछ चीजें कैलकुलेट करके दी है। सो दीज आर द फोर मेन मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ऑलराइट टिल हियर, नाउ let's dive into this further. If we see, interview method is further divided into three parts. One is personal interview, second is indirect, and third one is telephonic interview. So personal interview में क्या होता है? In personal interview there is one investigator, जो investigate कर रहा है, वो सामने वाले पर्सन के पास जाता है, उससे क्वेश्चन पूछता है और डेटा कलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक आ गया है, या फिर और कोई एपिडेमिक ऐसा हो गया है लाइक सिमिलर टू कोरोना वायरस। तो ऐसा अगर कुछ भी हो जाता है तो न्यूज रिपोर्टर को आपने देखा होगा, न्यूज रिपोर्टर्स क्या करते हैं, वो उस एरिया में जाते हैं अपना माइक लेकर के और फिर सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया बताइए आपकी फैमिली में किसको कोविड हो गया, कैसे हुआ, कहीं मार्केट में गए थे या किससे लगा, क्या प्रिकॉशन नहीं रखे। तो ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस को हमसे पूछते हैं। तो देयर इज वन टू वन इंटरैक्शन बिटवीन इन्वेस्टिगेटर एंड जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है, दोनों पर्सन के बीच में कॉन्वर्सेशन रहता है फेस टू फेस। नाउ इस मेथड का फायदा क्या है? वी कैन कलेक्ट द नेसेसरी डेटा quickly and accurately by applying this method. So ये मेथड अप्लाई करने से डेटा फटाफट कैलकुलेट हो जाता है, बस हमें सामने वाले के पास जाना पड़ेगा। तो ड्रॉबैक अगर हम देखें तो वी हैव टू गो देयर, हमें वहां जाना पड़ेगा एंड ज्यादा इंटरव्यूज हम नहीं ले पाएंगे बिकॉज वी आर डूइंग वन टू वन वर्क, वी आर डूइंग वन टू वन इंटरव्यू। ओके, देन सेकंड वन, sometimes there are some practical issues in reaching the respondent directly, कि अगर हमें इंटरव्यू तो लेना है बट हम उस पर्सन तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो हम वाया वाया किसी पर्सन के थ्रू इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं और फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। लाइक एग्जांपल ऑफ अ रेल एक्सीडेंट। नाउ नॉर्मली क्या होता है कि जब ट्रेन फास्ट चलती है और कहीं किसी एरिया में किसी पटरी में प्रॉब्लम हो गई या फास्ट चलने की वजह से देयर इज सम प्रॉब्लम, तो वहां पर ट्रेन का हो जाता है एक्सीडेंट। और अब न्यूज रिपोर्टर को क्या चाहिए? न्यूज चाहिए कि क्या सिचुएशन है वहां पे, कितने लोग इंजर हुए हैं, कितने की डेथ हो गई है,
देन उनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, एम्बुलेंस वहां पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो ये सारा डेटा जब उनको चाहिए तो इमीडिएटली न्यूज रिपोर्टर हो सकता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, तो वहां तक पहुंचना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो अपने कुछ सोर्सेज यूज करता है और डेटा कलेक्ट करता है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट इंटरव्यू। देन नेक्स्ट वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो टेलीफोनिक इज वेरी क्विक मेथड। सीधा सा अगर हमें किसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो हम फोन करेंगे और उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, सामने वाले पर्सन ने वो जवाब सही दिया है या गलत, उसकी बॉडी लैंग्वेज हम नहीं देख सकते, उसके एक्सप्रेशन हम नहीं देख सकते। सो देयर आर चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी के चांसेस पॉसिबल है। बट दिस मेथड इज क्विक एंड ऑल्सो नॉन एक्सपेंसिव, बिकॉज हमें आने जाने के लिए टाइम स्पेंड नहीं करना है, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी, सीधा सीधा आपने फोन कॉल किया एंड यू गेट द डेटा। सो द फर्स्ट टू मेथड्स आर बेसिकली मोर एक्यूरेट, जिसमें हम डेटा कहीं ना कहीं से डायरेक्टली ले रहे हैं, whereas the third one is bit less accurate। बट थर्ड वन में फायदा क्या है, देर इज अ वाइड कवरेज। हमें फोन कहीं भी करना है, चाहे विद इन स्टेट, विद इन कंट्री, इवन दूसरी कंट्री में फोन करना है, इंडिया से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी फोन करना है, इट सिंपली टेक्स फ्यू सेकेंड्स। लेकिन अगर फेस टू फेस करना है, इट टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ कॉस्ट विल बी इन्वॉल्व। देन amount of non-responses is maximum in this टेलीफोनिक इंटरव्यू। अगर हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया है तो उसमें नॉन रिस्पॉन्सेज ज्यादा हो सकता है, सामने वाले ने कॉल उठाया नहीं उठाया, तो देयर आर चांसेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज। नाउ सेकंड मेथड इज मेल क्वेश्चनरी। मेल क्वेश्चनरी का मतलब क्या है कि पहले के जमाने में क्या आता था, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड आता था, कंपनीज क्या करती थी, पोस्ट कार्ड के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करके और अपने अपने बायर्स को सेंड करती थी। बायर्स को क्या करना है, उसका जवाब देना है, उसका आंसर देना है, और उसका आंसर देने के बाद में कंपनी क्या करती, इसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करती थी। सो दिस वाज द सिनेरियो। बट प्रॉब्लम क्या हुई, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। कंपनी ने 100 पोस्ट कार्ड भेजे अगर, तो नॉर्मली 1 to 2 और 3-4 पर्सन आर रिस्पॉन्डिंग, बाकी लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, बिकॉज कौन सा पोस्ट कार्ड पे आंसर लिखे देन स्टैम्प पेस्ट करे, उसको टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। आज के जमाने में पोस्ट कार्ड नहीं आता है, ईमेल्स आती है, और ईमेल के अंदर कई बार क्वेश्चनरी होती है, वी हैव टू फिल एंड सेंड। लेकिन बात वही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपना ईमेल अकाउंट महीनों में एक बार ओपन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेल क्या चीज है और मेल आई है, किसी चीज का जवाब देना है। सो देर आर टू मच ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज। इस मेथड में नॉन रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, नॉन रिस्पॉन्सेज आर मैक्सिमम इन दिस मेथड। बट एक बेनिफिट क्या है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी कैन सेंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईमेल्स। दुनिया के किसी भी कोने में सेकंड्स में ईमेल पहुंच सकती है। तो मेथड का वन भी बहुत फास्ट है, क्वेश्चन भेजना बहुत फास्ट है, लेकिन वापस जवाब कब आएगा, दैट वी डोंट नो। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड। नाउ ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। व्हाई सो, बिकॉज इसमें हम खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर इज कलेक्टिंग द डेटा। लेट्स से इन्वेस्टिगेटर कोई डॉक्टर है और उनको सर्वे करना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, या गवर्नमेंट सर्वे कंडक्ट करवाती है, लाइक फॉर ब्लड टेस्ट, then for heart diseases, then for obesity। तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या जाते हैं, पूरे एक एरिया में जाते हैं, एक एक पर्सन का इंडिविजुअली उन्होंने वेट चेक किया, ब्लड टेस्ट किया,
देन उनके और पैरामीटर्स क्या है वो सब चेक किए। तो पर्सनली एक जना क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, डेटा पूछ नहीं रहा है। इंटरव्यू मेथड में डेटा हम पूछते हैं, हो सकता है सामने वाला गलत बताए या उसको भी गलत इंफॉर्मेशन, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड में वी कलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, so this method is basically time consuming, laborious and covers very small area। मेहनत ज्यादा है, आउटपुट कम मिलता है, लेकिन जितना भी डेटा मिलेगा that will be accurate। Then sources of secondary data। सेकेंडरी डेटा कैसे आएगा? सेकेंडरी डेटा हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल सोर्स है, कोई वेबसाइट है, मैगजीन, बुक है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, तो इन सारे जगह से हमें डेटा मिल सकता है। गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, स्टैटिस्टिकल डेटा से कनेक्टेड हो, फूड से कनेक्टेड हो, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमें डेटा मिल सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिल सकता है। देन प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट, दैट मींस सेमी गवर्नमेंट सोर्सेज है, लाइक NCERT जैसी कोई बॉडी है, एम्स हॉस्पिटल है, तो ये सारी जगहों से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अनपब्लिश्ड सोर्सेज, कुछ रिसर्चर्स या कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनका काम क्या है, मार्केट में रिसर्च किया एंड डेटा वो अपने पास रख लेते हैं, वो पब्लिश नहीं करते, डेटा कलेक्ट हो गया वो अपने पास रख लेते हैं। अगर किसी को डेटा चाहिए उनके पास जाकर के डेटा परचेज कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर बेसिकली सेकेंडरी सोर्सेज। Okay, so Swati is asking what is CSO? CSO means सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि जहां पे एक ऐसा ऑफिस जहां पर सारा डेटा रखा जाता है, जहां पे जो भी कलेक्टेड डेटा है वहां पर अवेलेबल रहता है, दैट इज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देन नाजिर आस्किंग एन्यूमरेटर्स का मतलब क्या है? एन्यूमरेटर्स यानी कि हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं, लाइक किसी 10 पर्सन के ऊपर हमने सर्वे किया है, और वो जो सर्वे करने वाला पर्सन है दैट इज रिगार्डेड एज एन्यूमरेटर, दैट इज इन्वेस्टिगेटर। तो एन्यूमरेटर का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, पर्सन का इंटरव्यू लेना, तो ये काम है एन्यूमरेटर का। ओके, देन कम्स स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी ऑफ डेटा, ये बेसिकली हम कह सकते हैं बहुत सारी प्लेसेस पे रेलेवेंट होता है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, लाइक बड़ी कंपनीज है उसमें लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो सारे ट्रांजेक्शन को चेक करना एक ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है। वो गो थ्रू करता है, फास्ट स्क्रॉल करता है डेटा को, ट्रांजेक्शन को, उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? स्क्रूटनी। ये स्क्रूटनी करने के लिए वी रिक्वायर इंटेलिजेंस, पेशेंस, एक्सपीरियंस कि किस तरह से हमें स्क्रूटनी करनी है, इसका तरीका क्या होगा, पूरा हमें पेशेंस रिक्वायर्ड है। अगर हम चार काम साथ करेंगे हो सकता है देयर माइट बी सम एरर। सो स्क्रूटनी करने के लिए इंटेलिजेंस, सम नॉलेज, एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, तभी हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का प्रेजेंटेशन, अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ डेटा को प्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो इट कैन बी प्रेजेंट इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, दैट इज इन पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में कब रिप्रेजेंट होता है? जब कोई फॉर्मल रिपोर्ट हमें देनी है, व्हेन देयर इज सम फॉर्मल रिपोर्ट, जैसे कि कोई गवर्नमेंट का टेंडर था, कंप्लीट हो गया, तो पूरी रिपोर्ट हमें बना के देनी है। किसी कंपनी की ऑडिट अगर की है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने,
तो सीए का काम सिर्फ ये नहीं है कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओके हो गया, नाउ जैसे यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सिर्फ इतना नहीं होता, इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। दे हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं 3CB 3CD। इट इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट जिसमें लिखा होता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं, देन कौन कौन सी अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो की है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से यूज किए हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया है, पीपो मेथड या लीपो मेथड, देन डेप्रिसिएशन का वे कौन सा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सी है। ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें लिखी जाती है, मेंशन होती है। सो दिस इज टैक्चुअल प्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट वन इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर का मतलब हो गया एक टेबल के अंदर हमें डेटा को प्रेजेंट करना है। इसका एक बेनिफिट, वी कैन कंपेयर द डेटा वेदर इट इज रो वाइज और इट इज कॉलम वाइज। डेटा कंपैरिजन इज पॉसिबल इन टेबुलर डेटा। And the third one is diagram. Diagram is basically regarded as the most attractive way of presenting the data. कि हमें अट्रैक्ट करता है कि कलरफुल ग्राफ बना है, पिक्चर्स बनी है, तो वो हमें अट्रैक्ट करे। लेकिन इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट किसी माना जाएगा टेबुलर मेथड, बिकॉज इट गिव्स एक्यूरेसी। इसमें सारा डेटा एक साथ में है तो वो कंपेरेबल भी होता है। देन क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो डेटा कैन बी क्लासिफाइड, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेटा को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इट कैन बी क्लासिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Like say, if we do all journal entries or whatever kind of entries we are doing in accounting, all these entries are done with according to the dates, like पहले April, फिर May, फिर June। तो all accounting entries are done date wise, date के according हम follow करते हैं। So it is also known as chronological, temporal or time series data. Second one is geographical or spatial series data. It means area के according हमें classify करना है, like population of Rajasthan, population of Punjab, population of Gujarat। तो area के according अगर हमने classify किया है, then it is geographical data. Third one is qualitative data। तो जहां पर हमारा डेटा क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है, लाइक एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, लिटरेट, इलिटरेट, मेल, फीमेल, all these are the qualities, and it is also known as ordinal data. Fourth one is quantitative, जहां पर न्यूमेरिकल फिगर होता है, it is quantitative data or also known as cardinal data। तो यहां पर डेटा किस में होगा? इन न्यूमेरिकल फिगर्स, इन नंबर्स। So mode of presentation we have discussed textual, tabular, and diagrammatic. Yes. So now, if we talk about the tabular method means we have to prepare the table. So what are the key components of a table? एक टेबल के की कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले लिखा जाएगा किसी टेबल का हेडिंग, दैट इज टाइटल ऑफ द टेबल। टेबल का टाइटल क्या है? एंड द टाइटल शुड बी शॉर्ट, प्रेसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइटल के अंदर हमने पूरा एक पैराग्राफ लिख डाला। सो टाइटल और हेडिंग शुड बी प्रेसाइज, ये शॉर्ट में होना चाहिए। देन सेकेंड वन इज हेडिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर हम कॉलम्स हेडिंग्स की बात करते हैं, कॉलम्स हेडिंग की बात करते हैं, सो दिस कॉलम हेडिंग इज नोन एज कैप्शन। कॉलम हेडिंग इज नोन एज कैप्शन, वेयर एज अगर हम रो हेडिंग की बात करते हैं, इट इज नोन एज स्टफ।
Row heading is known as stub. So first one is title of the table, second is caption, third is stub, fourth one is the data. That is the body of the table. वो place जहां पर हमारा data लिखा जाता है, it is known as the body of the table. And fifth portion is footnote. फिफ्थ पोर्शन क्या है? फुटनोट, जहां पर हम क्या करेंगे, कोई भी कमेंट अगर है रिलेटेड टू दिस टेबल तो वो हम लिखेंगे फुटनोट में। लाइक डेटा का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा, डेटा हमने कहां से लिया है, या फिर हमें कोई चीज रेफर करनी है, ऑल्सो रेफर टू पेज नंबर सो एंड सो, और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है, देन इट इज रिटन इन फुटनोट। ओके, सो दीज आर द 5 मेन पार्ट्स। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एक टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, सो यू हैव टू आंसर देयर आर 5 मेन पार्ट्स। इसके अलावा कुछ टेबल में डेट का कॉलम हो सकता है, लाइक इन केस ऑफ अ बैलेंस शीट, इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां डेट रिक्वायर्ड है। कुछ में टेबल नंबर होगा, लाइक इन केस ऑफ अ बुक, table number 10.1, table number 10.2, so it gives table number. So such other information also might be there. Then this complete upper portion of the table, टेबल का ये पूरा अपर पार्ट, इसको हम जॉइंटली क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बॉक्स हेड, दिस इज नोन एज बॉक्स हेड। देन एक और क्वेश्चन बनता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम कहां लिखते हैं, दैट मींस रुपीज, फिगर्स इन रुपीज, फिगर्स इन किलोग्राम्स, फिगर इन टन्स, ये सब कहां लिखा जाता है, ये सब इस बॉक्स हेड में लिखा जाता है। तो यूनिट इज रिटन इन बॉक्स हेड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रिटन इन बॉक्स हेड। ओके, देन टेबल को ऑलवेज क्या करना है, इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, नॉट मच कॉम्प्लेक्स डेटा शुड बी इंक्लूडेड, या ऐसा कोई डेटा जो इररिलेवेंट है, दैट शुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ टेबल। So now what are the benefits basically? So textual presentation facilitates the comparison. यहाँ पर हम comparison कर सकते हैं, किसमें, between rows and columns. Comparison is possible. अगर कोई डेटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पैराग्राफ में एक फिगर कहीं लिखा है, दूसरा कहीं और लिखा है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको समझना। बट जैसे ही हमने उसको एक टेबल में इंसर्ट कर दिया, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस। देन इट मस्ट बी फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि टेबल की हेल्प से हम डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम बनेगा विद द हेल्प ऑफ टेबुलर डेटा। विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल, कि जब तक हम एक टेबल नहीं बनाते तब तक एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। तो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टेबुलर मेथड ओवर टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, यानी कि टेक्स्ट के अंदर ये सब नहीं होता है, जबकि टेबुलर मेथड में ये सारी बेनिफिट्स में मिलती है। Then the next one is diagrammatic representation of data. तो डायग्राम के थ्रू हम कैसे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? So there are different kinds of diagram. One is line diagram, also known as histogram. It is not histogram, it is histogram. Second one is bar diagram, and third is pie chart. Now, लाइन डायग्राम में क्या होता है, जो भी डेटा अवेलेबल है हमें उसको प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ, और उससे एक लाइन बनी। सो लेट्स से you might have seen in the cricket matches line diagram, like either overs लिखे हैं and then runs are also mentioned, overs and then score, and this is a kind of line diagram
तो ये लाइन डायग्राम बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, कितने ओवर्स पे क्या स्कोर हुआ है, 5 overs 50 runs, 10 overs 110 runs, and so on. So this kind of line diagram is basically a one dimensional diagram. इसमें basically line एक ही तरफ मूव कर रही है, एक एक्सिस के हिसाब से मूव कर रही है, तो this is basically known as a one dimensional diagram. Now, when the time series exhibit a wide range of fluctuation, then we think of logarithm or ratio chart. Now, logarithm chart and ratio chart, it is basically a part of line diagram. This is a part of line diagram. Line diagram का ही ये part है. And according to this, logarithm या ratio chart कब use लेना है? When there is too much of fluctuation in the data. जब डेटा में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो फिर हम यूज करेंगे किसको, लाइन लॉगरिथम चार्ट को और रेशियो चार्ट. ऑलराइट, देन द नेक्स्ट वन इज बार डायग्राम. नाउ बार डायग्राम is basically divided into horizontal and vertical bar diagram. Now, horizontal का यूज क्या है, इसका यूज कहां पर होता है? तो horizontal bar diagram is used for qualitative data or data varying over space. यानी कि जहां पर qualitative data है, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, तो जहां पर हमें क्वालिटी को कंपेयर करना है, तो उस केस में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेते हैं. लाइक दिस काइंड ऑफ लाइंस आर प्रिपेयर्ड. तो जहां भी हमें कंपैरिजन करना है, जहां भी आपको कंपैरिजन करना है अमंग क्वालिटी, then we use horizontal line. But in case of quantitative data, we use vertical lines. So we prepare bars. इसमें क्या प्रिपेयर करना है? बार्स लाइक ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, year number 3. For each and every year, one separate bar is formed. Let's say this denotes 1000, 2000, 3000, 4000. So using this bar diagram, one can identify the value. One can find out the value of this bar. Now, this bar diagram is easy to compare. हम एक साल को दूसरे साल के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि सेकंड ईयर की परफॉर्मेंस फर्स्ट ईयर से बेटर है, थर्ड ईयर की परफॉर्मेंस वेरी पुअर है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, देयर इज अ डाउनफॉल इन थर्ड ईयर. तो इस तरह के सारे कंपैरिजंस पॉसिबल है इन केस ऑफ वर्टिकल बार डायग्राम. ओके, now if we divide this bar into different portions, like ये first portion हमने divide कर दिया, this is the first part, then this is the second part, and then the third part. So it is known as subdivided bar diagram. एक ही बार की हमने multiple options कर दी. Let's see, these are number of students in a college. एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? Now blue denote let's say science, green denote commerce, yellow denote arts. So science, commerce, arts. So we can easily classify them to this subdivided bar diagram. Now let's question 13.1. One example is given. Basically data is available from 2009 to 15 and some figures are given and you have to represent this. Now practically this is not a part, it is not a type of question which is relevant for exam, but just for the basic understanding, if we are plotting figure for each and every year,
हर साल का फिगर आपने प्लॉट कर दिया and then joined with the help of a line, then this kind of diagram is known as line diagram. Line diagram. Now there can be one further classification. अगर एक ग्राफ पे एक सिंगल लाइन बनती है, single line बनती है, then it is normal line diagram. But if there are more than one line, like first, then this is the second one. So when there are more than one lines, then it is known as multiple line diagram. Multiple line diagram. And it is used basically for comparison. Let's say this is score for team A and this is score for team B. So we can easily compare these two. Now, एक खास बात यहाँ पे जरूरी है, unit of A and B must remain same. Unit must be same. Same होना जरूरी. So this is basically multiple line diagram. If you see the next one, it is multiple axis diagram. Multiple axis diagram. Let's say there is x-axis, y-axis, z-axis. One diagram is according to y, second one is according to z. So these two are separate lines. They might have or they will have different units. So different units are involved in case of multiple axis diagram. Let's say one is for production of rice in tons. Rice का कितना production हुआ है? Other is the area. कितने area में हमने production किया है? Like area in hectares. So the unit is different in both the variables. Okay. So let's see this one. This example is showing two lines together. So it is an example of multiple line diagram. Now, this example you can see there are two different bars in each year. In 2012, two bars, 13, 14, 15, each and every year is showing two different bars. So it is known as multiple bar chart. It is known as multiple bar chart. So blank one denotes rice and shaded one denotes wheat. So we can see the production of rice and wheat at one go in one graph. एक ही ग्राफ में दोनों का प्रोडक्शन हमें एक साथ में पता लग सकता है. Okay, before doing the next one, 13.3, let's take a break of 5 minutes and then we will be continuing. Okay.
So let us continue with example number 13.3. So now in this case, it says draw an appropriate diagram with a view to represent the following data. Now see, this is basically talking about a pie diagram. Pie diagram means a circle diagram or a circular diagram. So whenever we are talking about a circle, the circle is made up of 360 degrees. 360 degrees. So in examination, we don't have to draw the circle, but we have to find out the angles for each and every portion. Angle for each and every portion. So what is the first step? We have to find out the total for all the sources. To find out the total for each and every one. The total comes out as 540. Total is 540. Now, what we have to do, we have to find out the angle for each and every portion. So it is a simple proportionate formula, 80 divided by total 540 multiplied by 360 degree. Okay, whenever it is a circular diagram, pie diagram, multiply with 360. Just like in terms of percentage, if we have to calculate in percentage, by default we multiply by 100. Similarly, in case of pie diagram, by default multiply by 360 degree. It will give you 53 degrees. Second one, 190 upon 540 multiplied by 360. It will give you 127 degrees. Then 160 upon 540 multiplied by 360, it will give you 107 degrees. Then 75 upon 540 into 360, 50 degrees. And last one, you are getting 23 degrees. So in this way, you can easily calculate the angle for each and every portion. And after that, it is marked in this way. So pie diagram बनाने का benefit क्या है? We can compare them easily. One portion can be compared with other portion, as well as one portion can be compared with the total also. तो एक portion का दूसरे portion के साथ में comparison possible है और साथ ही total के साथ में भी हम comparison कर सकते हैं. So this is the basic benefit of pie diagram. Now let us talk about the frequency distribution. Frequency distribution. तो जब हमारे पास data बहुत ज़्यादा होता है, then we classify the data according to some common attributes present in them. That is, हम उसके लिए frequency prepare करते हैं. So frequency data occur when we classify statistical data in respect of a variable or attribute. A frequency distribution may be defined as tabular representation of statistical data in ascending order relating to measurable characteristics. Now, what does this mean? कि हम जो भी data लिखते हैं, normally it is arranged in ascending order. Data का जो normal arrangement होता है, it is always done in ascending order. Now, जब हम data का group बनाते हैं, then data is classified as, let's say, the first type of series is known as individual series. Second one is known as discrete, and third one is continuous. Now, individual series is basically a raw data. इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक रॉ डेटा. तो जब हमारे पास एक रॉ डेटा अवेलेबल है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्स ऑफ few students. Somebody scored 10 marks, 12, 20, 18, 19. Only marks are given. So since 5 figures are given, so this data belongs to 5 persons. So this is basically a raw data, जो कि हम इंडिविजुअल सीरीज से डिनोट करते हैं. सेकंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज. इट कंटेन्स वेरिएबल
as well as frequency. In individual series, there is only raw data, that is only variable, no frequency. But in case of discrete series, there is variable plus frequency. Let's say marks and then number of students. 1, 2, 3, 4, 5. Now there are 10 students who have scored 1 marks. 25 students secured 2 marks. 100 students secured 3 marks. 250 secured 4 marks. And 90 students secured 5 marks. So marks and number of students. So this kind of data is known as discrete data or discrete series. So variable is normally denoted by X and frequency is denoted by S. Next one is continuous series. Continuous again comprises variable as well as frequency. Continuous में भी क्या होगा, variable and frequency दोनों होंगे, but variable will be in the form of class interval. Variable किस फॉर्मेट में होगा, क्लास इंटरवल की फॉर्मेट में होगा. Alright, variable will be in the form of class interval. Let's say marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and then 30 to 40. Here we have written number of students. So let's say there are 12 students, 18, 23, 17. So here class interval is basically the variable and number of students becomes the frequency. So these are the basic 3 types: individual, discrete, and continuous. So individual can be converted into discrete or it can be converted into continuous series. Then now if we convert the data, that is individual data, into discrete series, then there is a certain process which we have to follow. Let's take example 13.5. A review of first 30 pages of a book reveals the following printing mistakes. On first page there is 0 error. So first of all we will be writing printing mistakes. जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं वो सारे आपको लिखने हैं. तो इस डेटा में आपको नंबर्स गिवन है 0, 1, 2, 3, मैक्सिमम इज 6. वी हैव रिटन नंबर्स फ्रॉम 0 to 6. 6 तक पहले हमने नंबर लिखे. नाउ वन बाय वन व्हाट वी हैव टू डू, मार्क द टैली. फर्स्ट नंबर इज 0, so mark 1 tally in front of 0. Second one is 1, तो 1 के आगे आपको एक टैली मार्क करना है. नेक्स्ट वन इज 3 and 3, 2 times 3 is written, so 3 and 3, 2, 5, 6, so let's mark 2, 5, 6. So in this way we have to mark all the tallies. सारी टैली मार्क करने के बाद what you have to do, you have to count the tally marks. You have to count. Now 4 tallies are written in vertical and 5th one comes in cross. So it is a group of 5. So you can easily count. So it is 5, 5, 5 plus 1, 6, 5 plus 1, 6, 4, 2 and 2. Total becomes 30. So in this process, basically we use tally marks. In exam, we don't have to prepare this table, but this word is important. Tally marks is used while preparation of frequency table. So this tally word is important here. Okay. Now, there is one more type that is known as range. Now, what is range? Range का मतलब होता है maximum value minus minimum value. It is the difference of highest and lowest value. So in this data, if you see the highest value is 73, lowest is 44. So difference is 29 kilograms. So this is basically range. Now, if question is asking
Find out the number of class interval which can be formed. So there is one formula, that is maximum value minus minimum value divided by class interval or class length. So in this case, question is saying class length is 5. 5 का गैप रखना है, like 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. तो हमें 5 का गैप रखना है, तो कितनी क्लास इंटरवल्स बनेंगे? तो मैक्सिमम वैल्यू इज 73, मिनिमम वैल्यू इज 44 एंड इंटरवल रखना है आपको 5 का. तो 29/5 will give you how much? 5.8. But always remember, number of class interval can never be in decimal. वो कभी भी डेसिमल में नहीं होगा. तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा, always upgrade to next whole number. Upgrade to next whole number. 5.8 है, next whole number क्या आएगा? 6. If number is 7.6, next will be 8. It is 8.2, then also upgrade 9. आपको हमेशा आगे की तरफ जाना है. Always take the next whole number. Do not round off. हमें round off नहीं करना है. Understood? So maximum value minus minimum value divided by class interval. Now, if we further talk about continuous series, it is divided into two parts. One is exclusive and second one is inclusive series. Now, what is the example of exclusive? Let's say class interval is given 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Okay. Now, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो let's say 19 है, तो कौन से इंटरवल में आएगा? So of course 19 will come in this interval 10 to 20. अगर कोई नंबर 24 है, it will come from 20 to 30, right? But if a number is 20, अगर नंबर 20 है, तो हम उसे कहाँ लिखेंगे? 10 to 20 और 20 to 30 कहाँ लिखें? 20 दोनों जगह आ रहा है, तो 20 कहाँ मेंशन करेंगे? तो देखिए सीरीज का नाम क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज. तो क्या एक्सक्लूड करना है? कुछ तो एक्सक्लूड करना है. तो वी हैव टू एक्सक्लूड अपर लिमिट. Exclude upper limit. Now, what is upper limit? All these values on right hand side are known as upper class limit. Whereas जो भी left hand side में values लिखी है, इसको हम कहेंगे lower class limit, LCL. Left वाली value lower limit, right वाली value upper limit. So in case of exclusive series, upper limit is excluded. So 20 कहाँ include होगा? From 20 to 30. 40 कहाँ include होगा? From 40 to 50. Okay. So upper limit को exclude करना है always. Okay. Then in case of inclusive series, the class interval is, let's say, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. Now here there is no repetition. यहाँ पर कोई repetition नहीं. पहले आपने क्या चेक किया? 20 was repeating, 30 was repeating, 40 was repeating, but here there is no repetition. यहाँ पर क्लास इंटरवल में ब्रेक आ रहा है. 20 and 21 इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं है. Let's say if there is any number 20.34. Now 20.34 को हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? 11 to 20 या 21 to 30? अगर ये नंबर ज्यादा है फ्रॉम 11 to 20,
it will not be covered because maximum value is 20. अगर ये number 21 से 30 में डाले तो here minimum number is 21, so 20.4 is again not possible. That means this is the drawback of inclusive series, or we can say that inclusive series can be used only for whole numbers. जहां पर डेटा में होल नंबर है वहीं पर हम इंक्लूसिव सीरीज का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इट कैन नॉट बी यूज, इट कैन नॉट बी यूज फॉर डेसिमल नंबर्स. नाउ अगर ये इंडिविजुअल का ड्रॉबैक है, देन if required we can convert this inclusive series into exclusive series. There is a process of conversion from inclusive series to exclusive series. Now what is that process? कैसे हम convert करते हैं inclusive को exclusive में? Just take upper limit of first interval and lower limit of next interval and find out the difference. How much is the difference? Difference is 1. इस 1 का क्या करना है आपको? हाफ करना है. So it becomes 1/2 or 0.5. So upper limit में add this 0.5, lower limit subtract 0. Lower limit में less करेंगे, upper limit में add करेंगे. So 11 minus 0.5, it will become 10.5, and 20 plus 0.5, 20.5. Then 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5, and 40.5 to 50.5. So in this way, we can easily convert inclusive series to exclusive series. All right. Now again, one more important thing. Now, when we have converted this, so there is one new term introduced. This 20, 30, 40, all these were known as UCL, upper class limit. Whereas 20.5, 30.5, 40.5, these are known as upper class boundary, UCB. So what is the difference between these two? Upper class boundary is calculated as UCL plus difference upon 2, that is plus 0.5. And lower class boundary, this left values are lower class boundary. ये कैसे आया है? Lower limit minus d by. Okay. So in case of inclusive series, the original values denotes limit and converted values denotes boundary. And in case of exclusive series, limit and boundary both are same. UCL and UCB both are same in case of exclusive series. But in case of inclusive, there will be a difference between these two. Okay. Then next formula is for midpoint, mid value, also known as class mark. Three terms are there: midpoint, mid value, or class mark. Now, what is the formula? Lower limit plus upper limit divided by 2, or even you can use boundary, lower class boundary plus upper class boundary divided by 2. Result will be same. So in the given example, if you want to calculate the mid value, let's take 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Now for calculation of mid value, 10 plus 20 upon 2, it will give you 15. Then 20 plus 30 upon 2, 25. 30 plus 40 upon 2, it will give you 35, and so on. So in this way, we can calculate the mid value.
Then next formula is for width, class width or size of class interval. Class interval का size क्या है? So it is basically the difference between upper class boundary and lower class boundary. UCB minus LCB. So width can be calculated as the difference of boundary. Here you don't have to take the limit, always take the boundary. So if we see these two cases, here this is limit. If you apply limit 20 minus 11, result will be 9 and that is wrong. You have to take the difference of boundary. So 20.5 to 10.5. So result will be 10. So whenever you have to calculate class interval, class width, class size, class length, use the difference of boundary. Okay. Then next one is frequency density. Frequency density. Now, what is the meaning of this? Let us understand. X is given 5 or frequency 10, 15, 25, and just take class interval 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. Total frequency is given 50. Okay. Now, if you have to calculate frequency density, then how to calculate the frequency density? So there is one simple formula to calculate frequency density. It is frequency divided by class frequency divided by the class interval. Class frequency divided by class interval. So it is 10 divided by how much is the interval? Interval is of 5. So 10 by 5 gives you 2. Then 15 upon 5 gives 3. 25 upon 5 gives 5. This is frequency density. And the next term is relative frequency. Relative frequency means comparison of a particular frequency with the total frequency. Let's say the particular frequency is 10 divided by total is 50. So 10 upon 50, 0.2. For second one, 15 upon 50, 0.3. For third one, 25 by 50 gives 0.5. And total comes 1. So in this way, we can calculate the relative frequency. So relative का मतलब है comparison of one frequency with the total frequency. Now, graphical representation of frequency distribution. जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी पढ़ा है, इससे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन से डायग्राम्स पॉसिबल है? फर्स्ट वन इज नोन एज हिस्टोग्राम, also known as area diagram. Second one is frequency polygon, and third one is ogive or cumulative frequency graph. So basically, these are the three types of graphical frequency distribution. So let us talk about one by one. First one is histogram or area diagram. Now, this is a very convenient way to represent a frequency distribution.
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। एंड हियर अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। तो यहां पर सिंपली हम क्या करते हैं, वी प्रिपेयर बार्स सिमिलर टू बार डायग्राम। So vertical bars are formed and all these bars can be compared with one another। यहाँ पे बार को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो बार बेसिकली डिनोट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन इजीली हो पाता है इन दिस हिस्टोग्राम। So let's say this one, this is a diagram। So this is an example of a bar diagram. Sorry, vertical bars are there, and this is the example of histogram. This is the example of histogram where vertical bars are formed. Now these bars can be compared with each other. Now what is the most important feature of this histogram? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इस पे बनता है? That is, using histogram we can calculate mode graphically। हिस्टोग्राम की हेल्प से हम ग्राफिकली मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ना मोड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट द हाईएस्ट बार। ओके, दिस इज द हाईएस्ट बार। नाउ इन दिस हाईएस्ट बार मार्क दीज टू लाइंस। फर्स्ट पॉइंट से लास्ट नेक्स्ट बार तक जाना है एंड एंड पॉइंट से प्रीवियस बार तक आपको जाना है। कनेक्ट दीज टू। जैसे आपने कनेक्शन किया, देयर विल बी एन इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइंस, और इस लाइन के इंटरसेक्शन से क्या निकल जाएगा, मोड। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज मोड। यहां से मोड निकलता है। तो इन एग्जाम यू डोंट हैव टू all like do this calculation, but we have to remember that this is known as mode। इसको हम क्या बोलेंगे, मोड। that is graphically हिस्टोग्राम से मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। then frequency polygon। frequency polygon is basically prepared with the help of histogram। frequency polygon हिस्टोग्राम की हेल्प से फॉर्म हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी आपके बार्स हैं सबके मिड पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है। यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज मिड पॉइंट्स ऑफ द बार्स and you will get frequency polygon। so let us connect this। so this kind of line diagram is basically known as frequency polygon। तो पहले आपने हिस्टोग्राम बनाया, उसके जितने भी मिड पॉइंट्स हैं उसको आपने कनेक्ट किया, दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक ड्रॉबैक है, लाइक फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना है तो वी कैन नॉट कंपेयर। सो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए एक और पॉइंट जरूरी है, दैट इज क्लास इंटरवल मस्ट बी सेम। क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, जबकि हिस्टोग्राम में ये जरूरी नहीं है कि क्लास इंटरवल ऑलवेज सेम हो, ऑलवेज गैप सेम होना चाहिए। इट कैन बी इक्वल और इट कैन बी अनइक्वल, एनीथिंग इज करेक्ट। बट इन केस ऑफ frequency polygon the class interval should always be equal। the third one, the most important one, that is ogive। ogive also known as cumulative frequency graph। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, एक्यूमुलेशन है, उसको प्लॉट किया जाता है एंड यूजिंग दोस प्लॉटिंग्स we get some intersection। so there are two types of cumulative frequency।
two cumulative frequencies are there. First is less than type, and second one is more than type cumulative frequency. Less than and more than cumulative frequency. Now, जैसे ही आप इस दोनों को प्लॉट करेंगे, there will be intersection between these two. दोनों के बीच में कोई ना कोई intersection होगा, and from that intersection point you can calculate median. You can calculate median. Now, using this, we can calculate any partition value, or you can say any positional value. Now, positional values क्या होती है? This we will be doing in detail in central tendency chapter. But here we have to understand positional value means median, or even it can be quartiles. तो median, quartile, ये सब हम calculate कर सकते हैं using ogive. तो ogive help us to calculate median graphically. So graphically, you can find out mode, that is histogram will help you out. Graphically, you can calculate median, ogive will help you for this. But what about mean? Mean cannot be calculated graphically. Mean को आप graphically calculate नहीं कर सकते हैं. Okay. Then the next one is frequency curve. Now, frequency curve means it is a freehand curve, or it is a smooth curve which is prepared by taking an idea. So, four main types of frequency curves are there. One is the bell-shaped curve. Now, bell-shaped curve is most commonly used curve. In this bell-shaped curve, initially frequency rises. शुरुआत में frequency rise होगी, reaches its maximum, and then starts falling. This kind of curve is known as bell-shaped curve. So normally it is getting followed. Let's take some examples. Weight. बहुत कम weight वाले लोग, underweight, जिसका weight let's say 20, 25, 30 kg, underweight वाले लोग बहुत कम मिलेंगे. And too much of weight, like 150 kg, 160, 200, 225, too much of weight वाले लोग भी कम मिलेंगे. Average, normal weight वाले लोगों की quantity always बहुत ज्यादा होती है, like 60 kg, 70 kg, 80 kg. तो इन सब में frequency ज्यादा रहेगी. So initially starting वाले figures में frequency low रहेगी, highest वाले figures में भी frequency low रहेगी. Same follows for height. Then profits of some companies, बहुत ज्यादा profit and बहुत कम profit. So that also follows this bell-shaped curve. Second is U-shaped curve. U-shaped curve means initially frequency is more, then gradually it falls and reaches to minimum, and at last it again increases. शुरुआत में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर कम हो गई, एंड देन वापस बढ़ गई. लाइक मॉर्निंग टाइम में जब सबका ऑफिस जाने का टाइम होता है, रश बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, लाइक इन केस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर किसी भी लोकल ट्रेन, मेट्रोज, उसमें हम बात करें तो मोस्ट ऑफ ट्रैफिक कब होता है? अर्ली मॉर्निंग ऑफिस टाइम में. डे टाइम, आफ्टरनून ट्रैफिक या रश कम हो जाती है. देन इवनिंग में अगेन वापस सब ऑफिस से आते हैं, रश इज मोर, तो रश वापस ज्यादा होती है. तो इट फॉलोज यू शेप कर्व. देन कम्स जे शेप कर्व. जे शेप कर्व इनिशियली फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है, स्लो मोशन में, और बाद में फ्रीक्वेंसी फास्ट रेट से इंक्रीज होने लग जाती है. देन इट फॉलोज जे शेप कर्व. लेट्स से कुछ लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग 3:30, 4 o'clock, 4:30 बहुत कम लोग मिलेंगे. लेकिन जैसे ही 5 to 6 वाला टाइम होता है, अराउंड 6 o'clock बहुत ज्यादा लोग हमें देखने को मिल जाते हैं. सो इनिशियली इंक्रीज होने की स्पीड स्लो होती है, लेकिन एक टाइम के बाद फास्ट रेट से हमें ग्रोथ मिलती है.
so it follows J shape. And the last one is mixed. Mixed means up and down, such kind of shape is there. So we can say it is getting followed in schema. जहाँ continuous fluctuations, continuous ups and downs movement रहते हैं, then it is a mixed shape curve. तो सबसे ज्यादा इनमें से जो फॉलो होता है that is a bell shape curve. So all these curves are given. Okay. So this was the basic theoretical part. Now let's select some questions from this. Let's take question number 11. Data collected on religion from census report. Religion पे डेटा लिया है, कहां से लिया है? सेंसस रिपोर्ट से लिया है. तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा? तो ऑलरेडी पब्लिश डेटा को हमने यूज किया है, तो इट इज अ सेकेंडरी डेटा. Then data collected on height of a group of students after recording their height with measuring tape, then it is known as, हमने खुद ने मेहनत की है, डेटा कलेक्ट किया है, तो इट इज नोन एज प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी, ऑल दीज आर करेक्ट. So all of these. Then quickest method to collect primary data, सबसे फास्ट तरीका कौन सा है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का? फास्ट वे, so it is टेलीफोनिक इंटरव्यू, बिकॉज फोन करते ही हमें जवाब मिल जाएगा, जाने की जल्दबाजी नहीं रहेगी. बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, पर्सनल इंटरव्यू, वन बाय वन वी कैन आस्क द क्वेश्चन and we can get the answer, right? So I think till here everyone has given the answer. That's great. Then which method of data collection covers widest area? ज्यादा एरिया कौन कवर करता है? मेल क्वेश्चनरी, because within seconds we can reach to thousands and lakhs of people in any area. Amount of non-responses are maximum in, सबसे ज्यादा नॉन रिस्पॉन्स किसमें आता है? नो रिस्पॉन्स, मेल क्वेश्चनरी. Now let's take some questions from table portion. Most attractive method of data presentation, attractive तरीका कौन सा है? Attractive is diagrammatic. Then for tabulation, caption is, caption हम किसे बोलते हैं? The upper part of the table जो डिफाइन करता है किसको? कॉलम एंड सब कॉलम को, कॉलम की हेडिंग या उसके सब कॉलम की जो हेडिंग है. Then what is stub? Stub होता है रो हेडिंग. तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल which describe रो, जो रो को डिस्क्राइब करता है. Then 27, entire upper part of the table is known as, पूरा जो upper portion है उसे हम क्या बोलेंगे? That is known as box head, right? So till here everyone is correct. Unit of measurement is shown in, unit कहाँ show होता है? Box head. Now in tabulation, source of data if any, कि डेटा हमने कहां से पिक किया है, उसका सोर्स क्या है, वो कहां लिखा जाएगा? तो इट इज रिटन इन फुटनोट. तो फुटनोट में लिखा जाता है उसका सोर्स. Then which of the following statement is untrue for tabulation? कौन सा false है ये आपको बताना है. So statistical analysis of data requires tabulation. Tabulation of course, अगर हमें एनालिसिस करना है तो टेबल तो बनानी पड़ेगी.
It facilitates comparison between rows and not column. This is the false statement because comparison हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. So you have to select B option. Hidden trend, if any, in the data is noticed in. अगर कोई भी hidden trend है तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? डायग्राम में, पिक्चर्स में. ऑप्शन नंबर सी. देन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या कवर होता है? डायग्राम, चार्ट्स, पिक्चर्स, दैट इज all these are covered. मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कहां पर होती है? टेबल में, दैट इज टेबुलेशन. Then chart that uses logarithm of variable, जहां पर logarithm का यूज होता है, it is known as ratio chart और logarithm chart. Then multiple line chart is applied for. कहाँ अप्लाई होता है multiple line chart? जहां पर एक से ज्यादा लाइंस होगी but unit will remain same. As we have discussed in case of a cricket match, दोनों का यूनिट क्या है? सेम. ऑप्शन नंबर बी. Whereas in multiple axis chart, the units are different. Then horizontal bar diagram किसके लिए यूज होता है? Horizontal is for qualitative data, or you can say data varying over space. Both are correct. You can take option number D. Vertical bar diagram, vertical long bars, they are used for quantitative data, numerical data. Option number B. 39. Divided bar chart is considered for. जब bars को हमने divide कर दिया तो one component can be compared with others as well as with total. So comparing different components of a variable, also the relation of different components to the table or to the total. So both A and B are correct. So I think all these are very easy. You can do it by yourself. Let's do some practical questions. Set B, question number 1. So let's do this one. Out of 1,000 persons, 25% were industrial workers and rest were agriculture workers. So here we have to arrange the data in a table and find out the missing figure. So let's say there is industrial worker and agriculture worker. And 300 persons enjoyed World Cup matches on TV. So watched World Cup match and not watched World Cup matches. And then comes the total. So out of 1,000, so grand total is 1,000. Out of this 1,000, 25% are industrial workers. So 25% of 1,000 is 250. So remaining 75% is agriculture workers, that is 750. 300 persons enjoyed World Cup matches on TV. So in front of World Cup, you have to write 300. So remaining will be not watched, that is 700. Now the important data, 30% of the people who had not watched World Cup matches were industrial worker. 30% किसका? जिन लोगों ने मैच नहीं देखा है, that is 700 का 30%. ये कौन है? इंडस्ट्रियल वर्कर. तो 700 multiply by 30%, it will give you 210. So now we can find out the balancing figures: 40, 260, 490. Now, what is the requirement of question? Number of agriculture workers who had enjoyed World Cup matches. The agriculture workers and who enjoyed. So this is
260. So it denotes agriculture segment also and World Cup segment also. So 260 will be correct. Okay. So similarly, you can try out second one also. Now let's take the fourth one. Number of accidents for 7 days in a locality are given below. 0 to 7, these are the accidents, and then frequency is given. Now, what is the number of cases when 3 or less accidents occur? 3 or less. So you have to count all these figures. 3, so 31 cases, less 22, 19, 15. So you have to add all these and find out the answer. So how much you are getting? 87. So 87 is the number of cases having 3 or less accidents. Let's try fifth one also. The following data relate to income of 86%. So total is 86. What is the percentage of persons earning more than 1500? 1500 से ज़्यादा earn करने वाले लोग कितने हैं? So let us count number of persons. 36 plus 7. 43 persons out of 86. So if you calculate in terms of percentage, it is 50%. So 50% of population is earning more than 1500. Then sixth one. Following data relate to marks of a group of students. How many secured more than 30? So total is 100. Below 30 is 65. Now you require more than 30. So 100 minus 65 will give you 35. Okay. Find the number of observations between 250 and 300 between these two. So more than 250 gives 38, more than 300 gives 15. So what about between these two? So 38 minus 15, that is 23. So 23 observations lie between 250 and 300. Option number B. Okay. So in this way, you can easily solve all these questions. And I will be sharing some additional solutions to you on the application. So those who have not yet downloaded, you can download the Students Clinic application. And I am sharing just now all the additional lecture as well as additional material so that you can go through with that also. So all extra questions will be covered in that point. Okay. So here we have completed the topic now, and the next topic will be day after tomorrow. That is the new chapter, measures of central tendency. So today, what is your homework? You have to revise all these concepts, then try all these back questions. And in case of any doubt, you can discuss. So till then, bye everyone. Take care and see you soon.